Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session and based on various topics. In this series, we are going to do MCQs on labor laws and industrial relations. Labor laws already हो गए हैं ना, we are doing industrial relations and उसमें आज हम लोग करने वाले हैं industrial discipline and grievance procedure and ये दो parts में करने वाले हैं हम लोग and ये part 1 है. Now when it comes to the syllabus, close to 15 plus questions are asked from these topics only, labor laws and industrial relations. So with this you can understand the kind of weightage and the potential that it has to score high, because क्योंकि जब बेसिक भी अगर आप सही से कवर कर लोगे ना तो आप आराम से 10 प्लस क्वेश्चंस तो क्लियर कर सकते हो. सो owing to that this series has been started, and if you want to really score high in UPSC EPFO, be it APFC ओके और ईओ और एग्जाम दोनों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एंड यू कैन स्कोर गुड बिकॉज वॉट एवर द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs. सो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड रिविजन भी हो जाएगा एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO वेरी सून. सो होप you will utilize these sessions as per your requirement for your exam preparation. So the first question here comes, what is the purpose, primary purpose of industrial discipline in an organization? See, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी वर्क हो एज सच अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, क्योंकि इफ दे वर्क नॉट वर्क टुगेदर और डिसिप्लिन में नहीं है, सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली द एंड गोल उसको रीच करना बहुत मुश्किल है. सो हियर इन दिस केस industrial discipline also very important for an organization, wherein discipline refers to, अगर technically देखा जाए तो it refers to industrial discipline. It refers to the process of systematically conducting the business by the organizational members by regulating their behavior in according to the established rules and regulations of the organization. So उसी के basis पे ये चलेगा. So yes, here the primary purpose is to regulate the employee behavior in accordance with the established rules and norms. यहाँ पे C आंसर है. To punish employees for non compliance नहीं, they try to regulate the employees so that वो rules break ही नहीं करे बाद में. All that would be the primary purpose, तो यही है. To promote, ये false है. To promote a culture of creativity and innovation, no, this इसका अलग है. To create employee turnover and reduce organizational commitment, ये भी नहीं है. So here C is the correct option. So moving on to our next question, how does the concept of discipline in an organization impact employee behavior and workplace culture? So now when we talk about डिसिप्लिन, उसके दो ब्रॉड एस्पेक्ट्स है, एक तो पॉजिटिव डिसिप्लिन, एक तो नेगेटिव डिसिप्लिन. पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, without any punitive actions, if discipline is there, then it will create a positive atmosphere. So here the employees, they willingly conform to the establishment's rules and regulations, and simply without much strictness teamwork अच्छे से हो जाता है यहाँ पे, and everyone helps voluntarily. Okay, and that comes by म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल जो कोऑपरेशन है उसके थ्रू आता है. ना नेगेटिव डिसिप्लिन दूसरा, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे सोचते हैं कि एक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल गेट द पनिशमेंट, ये पनिशमेंट मिलेगा. सो इन द फियर ऑफ दैट पनिशमेंट द ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट द एम्प्लॉयज विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट समवेयर एक नेगेटिविटी टाइप का आ जाता है एंड देर वॉन्ट बी मच फ्रेंडलियर एटमोसफियर देर, एक मैनेजमेंट एम्प्लॉय टाइप का रहता है. सो हियर इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू, by fostering an environment where positive discipline encourages voluntary adherence to the rules through motivation and rewards rather than punishments, यहाँ पे rewards and appreciation इसके through वो काम निकालते हैं. And while negative discipline relies on fear based enforcement, often leading to mixed outcomes depending on organizational culture. So in this case B is the correct answer.
Moving on to our next question. Which of the following statements best explains the underlying causes of workplace indiscipline? Workplace में indiscipline क्यों आता है first place में? जब everything is good, then why? See, कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, लाइक अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, जैसे किसी के लिए बहुत अच्छे से पेमेंट हो रहा है सेम पोस्ट के लिए, किसी का नहीं हो रहा है एंड उसका कोई ग्रीवेंस सुनने वाला ही नहीं है, लाइक कोई पॉलिसीज है जहाँ पे कोई क्लियर रूल्स नहीं है मिनिमम वेज पे एंड वॉट एवर दैट इज ऑल्सो नॉट बीइंग फॉलोड बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियन में पोलिटिसाइजेशन की वजह से हो सकता है, या फिर वीक लीडरशिप की वजह से हो सकता है, या फिर प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ही नहीं यहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन बैरियर से सही से प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है, मीन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ द जो भी हायरार्की है वो सही से नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट एक्चुअली आर द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ वर्कप्लेस इनडिसिप्लिन रादर देन डायरेक्टली. सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. इनडिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस ओनली ड्यू टू वीक लीडरशिप, एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर कैन सिंगल हैंडेडली एंश्योर, ऐसा नहीं होता है, कई सारे अदर रीजंस होते हैं, ये फॉल्स है. वर्कप्लेस इनडिसिप्लिन अकर्स प्राइमरली ड्यू टू एम्प्लॉयज अनविलिंगनेस टू फॉलो रूल्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिसीज, ऐसा नहीं है. ओके, इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस डेफिनेटली they have to follow. अगर नहीं है तो definitely that would be 1 or 2 persons only, not the entire work force. So definitely ये भी false है. The main cause of workplace indiscipline in strict enforcement of rules and excessive organizational control. ऐसा भी नहीं है, एक रीजन नहीं है, ये कई सारे रीजन है and majorly they're all interconnected. So like your indiscipline is often a result of multiple interconnected factors including unfair management practices, lack of clear code of conduct, communication barriers, politicized trade unions, all of which contribute to workplace disorders including weak leadership. ओके ऐसा नहीं कि एक ही रीजन की वजह से होता है, वन लीड्स टू अनदर. ओके सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following scenarios best exemplifies the misconduct as per Schedule 1 of the Industrial Employment Standards or Standing Orders Act 1946? Now, अभी हमने बताया है कि discipline, okay, they have to follow the discipline. Now, which kind of conduct will say that they are not following discipline, they are not following that? Okay, misconduct. So कुछ ऐसे उन्होंने मेंशन किया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 कि ऐसे ऐसे करेंगे तो that will fall under misconduct and that would attract the punishment, fine, whatever that has been mentioned. Okay, so here सबसे पहले willful insubordination और disobedience, जो उसका बॉस बोल रहा है वो नहीं करना है. दूसरा theft, fraud, dishonesty like bribery लेना etc. और damaging, willful damage to the goods or the property of the organization in which they are working, वही bribes लेना और giving bribes to get the work done, all these fall under the same. And habitual absence, बार बार छुट्टी लेना and without leave के लिए अप्लाई करना and without leave also for more than 10 days, तो वो misconduct में ही आ जाएगा and accordingly they have to take the punishment या जो भी है. Habitual late attendance without informing, habitual breach of any law, जो भी laws मेंशन किया गया है बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जानबूझ के उसको वायलेट करना, या फिर रूड बिहेवियर. ओके, और जो बॉस है अपना सुपरवाइजर है उनका बात नहीं मानना है व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ वर्क, वॉट एवर द ड्यूटीज दैट पर्सन हैज टू डिस्चार्ज. हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट एट वर्क इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बट स्टिल डूइंग द सेम थिंग. एंड फ्रीक्वेंट, बार बार रिपीटेड अफेंडर्स भी होते हैं, कई बार एक बार वार्निंग देने के बाद भी फिर वही काम करते हैं. सो ऐसे चीज़ों में देन दे हैव मैक्सिमम 2% ऑफ द वेजेस दे कैन डिडक्ट एज ए फाइन, वो भी कर सकते हैं. ये सारे मेंशन है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. सो एक बार देख लेते हैं. एन एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू वर्क ओवर टाइम बियॉन्ड द शेड्यूल डिस्पाइट अ मैनेजर्स रिक्वेस्ट, नहीं ये नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अकॉर्डिंगली दैट विल हैपन. ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं. अ वर्कर इज एब्सेंट विदाउट लीव फॉर ए सिंगल डे ड्यू टू एन इमरजेंसी बट इन्फॉर्म्स द सुपरवाइजर लेटर, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली 10 days के ऊपर विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, दैट वुड बी कॉल्ड फॉर मिसकॉन्डक्ट. एन एम्प्लॉय रिपीटेडली अराइव्स लेट टू वर्क एंड इग्नोर्स मल्टीपल वार्निंग्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसकॉन्डक्ट.
A trade union leader organizes a lawful protest outside the company premises after obtaining necessary approvals. अगर necessary approvals के बिना करेंगे तो definitely that will be called for misconduct, but here no. So here C is the correct answer. अप्लाइड क्वेश्चंस, अब ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे जितने आप अप्लाइड क्वेश्चंस करोगे दैट नो उतना आप समझ पाएंगे कि नो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो आई हैव पुट लॉट ऑफ अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस इन दिस पार्ट्स. Ravi, an employee of XYZ Limited, has a habit of using his phone during working hours despite repeated warnings from the management. Due to his continuous disregard for company policies, the employer decides to impose a fine which is deducted from his salary every month. According to the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, what is the maximum fine that can be imposed on Ravi? अभी हमने देखा था what is that? It is 2% of his monthly wages. जिस month में उनको लग रहा है कि he has done he has violated or he had disregarded the policies of the company, definitely for that month they can deduct the wages as a fine, and here B is the correct answer. Moving on to our next question. Okay, an IAS officer, Mr. Sharma, is accused of corruption and misuse of power. Following the principles of handling in discipline, what is the correct course of action under Article 311 of the Constitution of India? Now, what is this Article 311 of Constitution of India? Now, here, if any person of who is a member of the civil services of the union or on all India service or a civil service of a state, the person cannot be dismissed until and unless जो भी charges उन पे लगे हैं for which the person is given a reasonable opportunity to explain. Okay, only then some disciplinary action would be taken based on the based on the proceeding, based on the necessity, based on the outcome of that the explanation and the inquiry that has been done. So here in this case, Mr. Sharma must be given a fair inquiry and an opportunity to defend himself before any penalty is imposed. 311 Article 311 of the Constitution यही कहता है, ठीक है. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उनको सर्विसेज से रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट द प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से इंक्वायरी, फेयर इंक्वायरी, ओके, द एनी पर्सन एक फेयर इंक्वायरी करना चाहिए एंड देन एन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली in this case. So here B is the correct answer. So coming to the next question, an employee in a public sector undertaking is accused of financial misconduct. The management decides to terminate the employee without conducting any inquiry or allowing them to present their defense, उनका खुद का जो भी explanation है. Now, which principle of natural justice is being violated in this case? See, when we talk about disciplinary actions, be it in PSUs or in private sector, they have to follow few principles. One of those principles is the principle of natural justice, that is, which is founded in equity, in honesty and right. Okay, in सही सेंस में देखा जाए तो, and the principle of this natural justice firmly grounded in articles 14, 21 and 311 of the constitutions, wherein there are two major ingredients of natural justice. एक हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, दूसरा दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. दोनों इंग्रेडिएंट्स व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे इक्विटीज एंड इक्विटी, ऑनेस्टी एंड राइट, सही काम और सही तरीके से. So when we talk about that here, which is that principle, which is that ingredient of natural justice that is being violated in this case? So here in this case D, odi alteram partem, the right to be heard before being condemned. मतलब उनको explanation देने का चांस ही नहीं दे रहे हैं. अगर हो सकता है उनसे अनजाने में हुआ है, या फिर someone might have place them in that position, whatever might be. So until unless we hear their explanation, it's not final. So here one of those जो ingredients या process जो बोलते हैं, that is odi alteram partem, that is a right to be heard before being condemned. Okay, so here D is the correct answer.
अब नेचुरल जस्टिस का जो दूसरा इंग्रेडिएंट हो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. अ सीनियर मैनेजर इन ए प्राइवेट कंपनी इज accused of favoritism in hiring. The company appoints the same manager's close friend as the head of the inquiry committee. Okay, now this raises concerns about impartiality. Now which principle of natural justice is most at risk in this situation? See here, nemo judex in casua sua. No one should be a judge in those in their own case. So always ऐसे cases में एक impartial person should be made as a judge, so that सही मायने में हम नो जजमेंट मिले. Okay, so here is the correct answer. So nemo judex in causa sua and audi alteram partem, ये दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है. Now moving on to our next question. In a government department, two employees A and B were found guilty of the same misconduct under identical circumstances. Circumstances भी almost similar थे. However, employee A was given only a warning, while employee B was dismissed from the service. Now this situation violates which key disciplinary principle? Disciplinary principle में first one हमने देखा है principle of natural justice. अब second आता है principle of impartiality or consistency. That is, identical cases should have consistent actions. ऐसा नहीं कि एक के लिए एक तरह दूसरे के लिए दूसरी तरह होना चाहिए. So वही वहां दिख रहा है कि partiality दिखाई जा रही है. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. A senior manager in a public sector organization discovers that an employee Raj has committed a serious violation of company policy. During the disciplinary proceedings, the manager frequently makes sarcastic remarks about Raj's mistake and expresses dissatisfaction in punishing him. Okay, now this behavior violates which fundamental principle of disciplinary action? Now here we are going to look at the third principle of disciplinary action, and that is principle of impersonality. Disciplinary action should be free from personal emotions or biases. तो पहले से उनके एक perception है, so because of which he keeps on repeating that, saying that he has done this, he has done that, etc. So here it is B, that is the correct answer in this case. Moving on to our next question. In the disciplinary procedure, the preliminary inquiry report plays a crucial role in determining the next steps. What is the primary purpose of this preliminary inquiry report? Now, जो भी कंप्लेंट या फिर ऑफिसर है या फिर जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है, दे आर the ones who will create the preliminary inquiry report. Okay, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन टाइप का हुआ है या फिर मिसकॉन्डक्ट हुआ है. Okay, now based on the gravity of what that has mentioned in that report, accordingly they will take the action की चार्ज शीट फाइल करना है उनके ऊपर. मतलब उसके बेसिस पे अगेन इंक्वायरी एक टीम बैठेगा एंड दे विल ऑल डू द रिस्पेक्टिव इंक्वायरी एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन विच पनिशमेंट या जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं और एक वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं. ओके, सो दिस अ मेजर व्हाट यू विल से purpose or objective of this particular preliminary inquiry report. So here in this case, to evaluate whether the complaint has sufficient merit to warrant a formal charge sheet or disciplinary proceedings. दोनों में से किस तरह से करना है on the charged officer, that is जिसके ऊपर ये complaint आया है. Okay, so this is here B is the correct answer. Now applied question on the same. During the preliminary inquiry into allegations of workplace misconduct, the inquiry officer finds that the accused employee's actions were of minor magnitude and did not cause significant harm to the organization. Okay, according to the proper disciplinary procedure, what would be the most appropriate course of action? क्या उसको अभी decision लेना है? 1. Proceed with a formal charge sheet and disciplinary hearing to ensure strict compliance with the rules. माइनर है, जब भी माइनर मिसकॉन्डक्ट होता है इतना चार्जशीट वो सब फाइल करने की जरूरत नहीं होती है.
So false. Ignore the complaint entirely as minor offences do not require any response. No, response required, but not to the tune of option A. So or to the tune of option B ki bilkul chhod de. So this is also false. Recommend immediate suspension of the employee to deter future violations. No, ये भी नहीं है, इतना भी strict नहीं है. So they have to provide an oral or written warning to the employee, ensuring they understand the expected code of conduct from them based on the whatever that mistake that the person has done. So here C is the correct answer, because this is what the disciplinary procedure says under complaint and preliminary inquiry. Moving on to our next question. Rajiv, a senior manager in a public sector company, is accused of leaking confidential information to the competitors. Now the company initiates a disciplinary procedure beginning with a preliminary inquiry. After finding sufficient grounds, a charge sheet is issued. Now इस केस में grievance प्रॉब्लम थी एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उनको पता चला कि उनको प्रूफ मिल गया कि यस द पर्सन हैज कमिटेड द मिस्टेक. So here based on that charge sheet has been issued and his explanation is sought. Charge sheet में क्या है, that would be sent and explanation is sought from the charged officer. Okay, Rajiv is then placed under suspension while the inquiry proceeds. Now based on the standing disciplinary procedure, what is the next logical step in this process? Okay, now ये सब हो गया है. Now here in this case they have to conduct a formal inquiry with an impartial committee to ensure Rajiv gets a fair chance to defend himself before any punitive decision is made. Obviously जो हमारे article 1421 and article 311 of the constitution, they all say the same thing. We have to give fair chance to the person before कितना भी बड़ा इंडियन जुडिशियल सिस्टम ही वैसा है, कितना भी बड़ा मिस्टेक किया हो किसी पर्सन ने, अनटिल अनलेस वी हियर देयर एक्सप्लेनेशन देयर फ्रॉम देम एक जो भी पनिशमेंट है उसे डिसाइड नहीं किया जाता है. ओके, वो फेयरली उसमें मेंशन्ड है ही आर्टिकल्स 1421 एंड 311 में. सो हियर इन दिस केस बी इज द करेक्ट आंसर. ना अभी हमने बोला है कि चार्जशीट इश्यू करना पड़ता है अगर उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला कि गलती हुई है. नाउ दिस चार्जशीट कैन बी इश्यूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द अथॉरिटी हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और बाय एन अथॉरिटी सीनियर इन रैंक टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉयर. उनसे नीचे नहीं. ओके, उनसे ऊपर जो व्हाट यू विल से जो चार्ज्ड ऑफिसर है उनके ऊपर के जो पोजीशन सीनियर है वही उस पर्टिकुलर अथॉरिटी में रह सकते हैं. ठीक है, एंड हियर वी आर सेइंग चार्ज शीट फाइल करना है. सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर दिस चार्ज शीट? सो ये व्हाट इज अदर नेम फॉर ए चार्ज शीट एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय टू रेस्पॉन्ड टू द चार्जेस. So here this is also called as show cause notice. They have to show the cause, okay, or the explanation for the notice that is being served to them. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Amit, an employee in a government organization, receives a charge sheet for alleged financial irregularities. In response, he submits a written explanation claiming that the discrepancies were due to a clerical error and provides a supporting evidence as well. Now, the disciplinary authority reviews his explanation. Now, which of the following actions best aligns with the principles of the disciplinary procedures? Now, what does the principle say? It says that अगर explanation satisfactory है, then the DA जो भी disciplinary authority है, who is always to be above the as a senior to the charged officer, they can withdraw the charge sheet. अगर नहीं satisfied है तो definitely they can go for a formal inquiry जहाँ पे फिर एक टीम रहेगा, they will inquire properly and all that and come with a conclusion जो भी डायरेक्शन है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. उसका ये नहीं कि इमीडिएटली इम्पोज ए पेनल्टी. नो, ही कांट. The DA dismisses Amit from the service without further consideration. No. The DA ignores Amit's explanation and proceeds with an inquiry. No. Until and unless is not satisfied. उसके लिए भी इनको रीजन देना पड़ेगा. नहीं, ये इन्होंने बोला है but that doesn't sit well with the proof that we have got. उस तरह से they have to mention only then he can go ahead. ऐसा नहीं कि without reason they can go ahead. So here C is the correct answer.
So, hope friends you have liked this session. Before winding up the session, I have a small announcement. Currently, EduTap is offering various courses targeting for all the students who are targeting the upcoming UPSC EPFO, both APFC and EO और AO examinations 2025. So, इसमें 3 तरह के courses उन्होंने launch किया है. सबसे पहला course आता है master course. ये उन बच्चों के लिए बहुत beneficial रहेगा जो बिल्कुल 1 point source से उनको पूरा content मतलब सारे subjects के लिए content etc. चाहिए. So यहाँ पे the entire content is provided to you in the form of PDFs, videos, chapter quizzes, live classes, हर तरीके से टेस्ट एक्सेट्रा एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. along with that every week on Thursday कुलदीप सर will be meeting you online and वो आपको पूरा ये जितना भी कंटेंट है उसको किस तरह से स्ट्रैटेजिकली आप अपने प्रिपरेशन के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं वो समझाएंगे. along with that आपके जो भी क्वेरीज है वो he'll be looking into that. एंड सेकेंड कोर्स हमारा आता है टेस्ट सीरीज प्लस. ना इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें एक आधे सब्जेक्ट से चाहिए, बाकी हम लोग खुद कर लेंगे एंड हमें खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए. नाउ दिस इज बेस्ट फॉर देम क्योंकि इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स है वो आपको मिलेंगे along with the टेस्ट सीरीज फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. तीसरा कोर्स है बिल्कुल टेस्ट सीरीज, मतलब इसमें कोई कंटेंट एज सच पीडीएफ वीडियो से सब नहीं मिलेंगे बट यू विल हैव the test practice questions and real exam feel वाले mock test and all that. and this best suits for those उनका preparation खुद से उन्होंने कर लिया या फिर एक बार एग्जाम दे दिया है एंड फिर से रिपीट कर रहे हैं. now they don't want to go for any other course but yes they do want lot of practice questions and mock test. उनके लिए ये the best है and based on your requirement you can make an informed decision. अगर आपको कुछ queries है तो आप टीम से पूछ सकते हैं. all the details have been already provided in the description box. Thank you very, very much for being with me so patiently and a very all the best and meet you all soon with the next part soon.